Good morning, students. Again, I am with you with another very important segment of examination 2024. So, this is more important for class 10 student because they first time appear in board examination, and first day they face a lot of difficulties also. So, to sort out those difficulties, I am here with you with that the cover page, or you can say the detail of the cover page, he or she has two phases. So in the title page of the answer book is somewhat it is simple look like this. So and in this also you remember that, so this is the actually red color, and in class 12 it will be in blue color. This is also important thing to distinguish class 10 and 12. And written here also it is secondary, okay, and in class 12 it is written as senior secondary. Yeah? So now first one is that is subject. In subject, suppose mathematics I am taking. Here you write mathematics, and here you write code is, if it is standard, so you write 041, or if it is basic, so you write 241. Clear? Only one thing you have to write. Only one thing you have to write. Clear? So I am taking standard one, so no need to or this one. A basic 241 you have to write. Pariksha ka दिन and series. Suppose it is Monday. And here slash it is suppose 15 Feb 2 and it is 2024. Is it clear? There any doubt? No. These are two very common columns. So after that, medium. So most of the students, because CBSE based schools are there, so it will be English. Medium of answering, that is clear. Then it is code number. Code number. So it will be written on the top of that one in that question paper. It will be 365 or 165 like that. It will be question paper के top corner में लिखा रहेगा 165 4132 like this. It will be, है ना. And the set, very important thing, आपकी जो कॉपी का जो इवैल्यूएशन जब सेंटर पे जाती है, so it is very important thing because three sets are there. So to distinguish the answer sheet according to set, so it is very important. Suppose set number 3 आना है, तीन ही सेट होते हैं. So set number 3 अगर है तो उसको प्रॉपर्ली क्या कर लेंगे आप, सेट कर लेंगे. So it is very important. यहाँ बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. Otherwise, yes, this is set number. If you are taking additional answer sheets, है ना, जरूरत नहीं पड़ती है और कोशिश ना करें कि ज़्यादा आंसर शीट लें. दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम. आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती है दैट इज 5 मिनट, तो एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट मान के चलिए. साइन वाइन इधर उधर आना जाना. सो दैट्स वाई मैथ्स की बात करूँगा. मैथ्स की कॉपी में ऊपर लिखा है विद ग्राफ. इन मैथ्स आंसर शीट इट इज रिटन एज विद ग्राफ, है ना, उसमें ग्राफ शीट भी होती है. सो विद टॉप में लिखा रहता है, और इन रिमेनिंग एंड नॉर्मल मेन आंसर शीट्स में ऐसा विद ग्राफ नहीं लिखा रहता. ठीक. सो अतिरिक्त आंसर शीट्स यू आर टेकिंग, तो अगर आपने एक ले ली, एक लिखो, दो ले लिखे, दो लिखो. सपोज अब एक ले ली. सो पहले का विकल्प इस यस और नो, है ना. अगर यस है तो यस लिखेंगे, अगर नो है तो हमने क्या लिख दिया, नो. देन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, तो आपका कोड अगर है तो दैट विल बी मेंशनिंग एडमिट कार्ड. अदरवाइज नहीं है तो आपको लिख देंगे क्या, नहीं. ठीक है. यस और नो, आपने यस कर दिया, नो लिख दिया, है ना. Then come to this side. So you have to write your name, है ना. Suppose I am writing here Rahul Joshi. It is RAHUL, और उसके बाद स्पेस छोड़ेंगे आप, JOSHI. So now say it R कहाँ पर है, this is, और सेटिंग आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. दैट शुड बी ना हाफ होगा ना ज्यादा बड़ा होगा. ठीक है. आर ए इज हियर. और सेट करने के लिए आप कोशिश ये करेंगे, आप पेन थोड़ा आपका थोड़ा अगर मोटा होगा ठीक होगा, टाइम कम लगेगा. ठीक है. RAH. सो दिस इज ओमार शीट को भरने के लिए आप थोड़ा सा मोटा पेन इस्तेमाल करेंगे, दैट विल सेव योर टाइम.
RAH, because time is very important. Time management is very important for examination. कोई भी एग्जाम है, टाइम हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. RAHUL, L is here. Rahul Joshi, J is here. LGHIJ. JO, S, H, I. So motor pen, if you are having thick pen, so it will save your time. That is, shape your these circles to be very अच्छे होने चाहिए ना. Okay, राहुल जोशी. So next thing is that is roll number है. रोल नंबर आपका एग्जैक्ट इतने नंबर का होगा. That will be 2 5 2 3 4 1 2 and it is 4. So 2 is this. 5 is this, and then 2 is this again. This roll number will be mentioned in your admit card. 3 is this. ठीक है ना. 4 is this. Then 1 is this again. Then 2 is this. And then 4 is this. So this is your roll number set. Okay, important. Basic subject code. Suppose it is 0 subject and mathematics I am taking, so it is 0 4 1. So 0 is here. 4 is here. 1 is here. अगर बेसिक है तो 4 1 होगा. ठीक है. It is. Then केंद्र संख्या. सेंटर नंबर विल बी मेंशन, दैट इज है ना 3 डिजिट 4 डिजिट का जितना भी होगा. सो दैट इज लिख देते हैं यहाँ. इफ यू आर राइटिंग पीछे से लिख देता हूँ है ना. 3 5 1 9 0 सब कुछ. so 3 is this, very simple. then 5 is this, it is very simple है ना. कुछ भी नया नहीं है. so but प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. You may download from the CBC site. 9 is this, and last one is 0 is this. 0 सबसे लास्ट में होगा. ठीक है, आपको ध्यान रखना. So this is okay. Then you have to move. Okay. So this is all about this is to fill the OMR sheet. So hope that it will help you. So this is all about. So this is all about how to fill the OMR sheet, and hope that it will help you, and in coming examination, so you will fill it without any mistakes and feel comfort. So with best wishes again. So this is sufficient for the day, and with next video I will come you again. Thank you.